ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. Morning guys, I studied a little bit because I knew today will be a chaotic day. Need to go to the bank and actually we have to go to bank 2 times, first for hostel fees and then for application fees. Then I have to roam around whole college to get no due signature from everyone, so it's gonna be a chaotic day. Right now I'm going to the mess to have my breakfast and also pay the mess bill. खाना तो ढंग का होता नहीं है, देवांतु का मेस. Paid the mess bill. Going up. Yep. I got ready and need to फिर से मेस जाना है यार. मैं सिर्फ 10 दिन थी और उन्होंने ज़्यादा डाल दिया आई थिंक, सो जाके वो देखना है एंड देन मेस का सिग्नेचर भी लगवाना है. ओके, इट्स गोना बी अ chaotic day. Let's start. ओके, मेरा मेस का एक हो चुका है, ये सब पे साइन लगवाना है. ओके, ये भी मिल गया है अभी. ओके, should get signature but first we'll see our bunny. Bunny is basically the name of my scooty. मेरा bunny. Hello bunny. बहुत गंदा हो गया. I went to sports section, there was no one. I went to library, there was no one. I'm not gonna waste time. I'm going to bank right now to pay hostel fees, but I need to go to hospital for taking my application from my friend. So let's go. I'm at the hospital. हमें फीमेल मेडिसिन वार्ड जाना है अपना एप्लीकेशन लेने के लिए. Let's go. मिल गया गाइस, लेके भी आ गई. You know, every time I come to hospital, there is one or the other patient who comes to me and tells कि मैडम ये वार्ड कहाँ पर है, मैडम वो रूम कहाँ पर है. आई एम लाइक, मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ पर, मैं खुद ढूंढ रही हूँ, तुमको कैसे बताओ. हम खुद चूज़े हैं यहाँ पे. आई थिंक यू कैन रिलेट इफ यू नो यू आर अटेंडिंग postings and especially in a government college, government hospital. Let's go to bank. हम लोग आ गए हैं बैंक, चल लेते हैं. I first thought that I lost क्योंकि इतने दिन हो गए ना, तो पर फिर भी आ गए बैंक. Let's just back again in college. स्पोर्ट्स सेक्शन देखा नहीं है, वो सारी ट्रांसफ़र हो गए थे. I don't know what to do, so I'm going to library. Hopefully school will be there. Hi guys. Famous ಆಗ್ತಿರಪ್ಪ ನೀವು. ಇದು ಹಾಕಿ ಏ ಓಕೆ. ನಾನು ಏನಂತ ಹಾಕ್ತೀಯ? ಸ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್.
ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲಿಡಮ್ಮ ಬಿಸಿಲು ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ಈಗ ನೀನು ಒಂದು ಹಿಂದೆ ತೆಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸನ್ಕಿಸ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಗುರು ಕೆಳಗಡೆ ಗಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು back to college. Hi guys, I know I'm in a messed up situation, but I'm so tired right now. मतलब पैर तो मतलब चल ही नहीं रहे इतना ज़्यादा. I don't want to go to mess also to have lunch, but yeah, need to go. ये देखिए कैसे जा रहे हैं एप्रन पहन के सब मसड़ी तो सर डॉक्टर साहब ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಐತಿ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ डॉक्टर साहब अरे अरे यार सब हाय अन्न ಸುಂದರ अरे हाय अन्न ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುಂದರ ಎప్పుడు ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನು ಹಂಗೆ ಹಾಯ್ ಬ್ಯಾಡ ಹಾಯ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ನಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ पर फिर भी ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಸ್ ನೋಡು ब्लॉग ಮಾಡಕ್ಕೆ डॉक्टर साहब के साथ On the scale of 1 to 10, how much tired are you after today? Hi guys, good morning. It's the next day. I know I didn't vlog anything yesterday because I was so tired and my legs were literally paining. I just came back to hostel and just slept and woke up after I think 1 or 2 hours. Oh, this is so cold over here. Okay, so no due certificate pe total we need to get 8 signatures and I think 5 signatures are done. 3 more signatures I need to get today. Forensic, PSM and sports का भी कुछ भी नहीं पता है. PSM they'll put list it seems and forensic is like we went to forensic मतलब how to tell हम लोग गए थे forensic कल but हमको भगा दिया गया because टाइम हो गया था. हमारा दुखड़ा कोई नहीं सुनता यार स्टूडेंट्स का दुखड़ा seriously but yeah it's 9:30 right now and 10 o'clock we'll go to get forensic signature and after that I think most probably PSM का भी हो जाएगा आज and sports signature तो पता नहीं अभी उसका क्या है. तो after that, after getting all the 8 signatures, we need to go to then principal office and get the चालान and वो चालान लेके बैंक में भरना है फिर वो रिसिप्ट लेके आके एडमिशन सेक्शन में देना है. तो yeah, another chaotic day today and it's so cold yaar. Seriously, I didn't expect Koppal to be this cold but yeah, it's very cold. I had my breakfast. It was idli vada in mess. Yeah, thing gets completed today then I'm gonna pack my bag and just go back to my home because I literally don't want to stay over here. अपने घर जाना है मुझे घर जाना है. पढ़ाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी. Literally I just can't study in hostel. Okay, I need to just go to my home, my study space and everything. I had a proper routine in my home. Okay, मैं 6 बजे उठती थी, 1-1.5 घंटा पढ़ाई करती थी, then I had to have breakfast, all this it was like a
प्रॉपर फिक्स्ड शेड्यूल, ओके, बट यहाँ आके पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड आई डिडंट वेक अप अर्ली ऑल्सो टुडे, सो या आई जस्ट वांट टू गो होम एंड यू नो स्टडी एंड हैव गुड फूड एंड गुड स्लीप, बस बस इतना ही है। यहाँ के सब तबाह हो चुका है, आई एम जस्ट वेटिंग टू गो होम, लिटरली लाइक हेल। सो या I think we're gonna go to forensic department now. Let's go. Here. सब टेंशन इरा मुखा तोर्सिनिंद ಗೇಮ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾನ ಕೋತಿ. ಇವತ್ತಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವಾ Finally come out of bank. We went at 1 o'clock and coming back at 4 o'clock. 3 hours without food, without anything. We were inside the bank for 3 hours. Now we have come to a Khanawali to eat lunch. Aesthetic ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ತಿನ್ನ ಸ್ಲೋ. तो दिन भर भूखे रह क्या, इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ फूड एट द एंड ऑफ द डे ಹಿಂಗ ಅನ್ಸ್ತದ. Heaven, especially ಹೋಳಿಗೆ. Hi guys, I had lunch. I just came back to my room. I'm gonna change, freshen up and sleep because मेरा आज का कोटा हो चुका है. All the 8 signs, everything जो भी काम था सब कुछ ख़त्म हो चुका है. बैंक पे जाके हम लोग चालान भर के आ गए, कॉलेज फीस, एप्लीकेशन एग्ज़ाम फीस बेसिकली, and that चालान we need to submit it tomorrow in the office along with no dues and application also, that we're gonna do tomorrow morning. अभी कुछ भी सब बंद हो चुका है, 5 बजे के हैं तो. And tomorrow again I need to go to PSM department to sign something, I think attendance sheet. So I'm going to sign that tomorrow morning 10 o'clock. By 11 I think everything will get over and I'm going to say bye bye to couple and go to my home. I'm so tired, like 2 दिन से कुछ आज भी पता है seriously we went to bank at 1 o'clock and came out of the bank at 4 o'clock. मतलब इतना रश था एंड वो लोग जल्दी भी नहीं कर रहे हैं, दे आर लाइक डूइंग इट सो स्लोली एंड ऊपर से बीच बीच में लोग आए जा रहे हैं. सो इट वॉज लाइक अ केओस, बट फाइनली आई वॉज लाइक बीइंग पेशेंट कि नहीं हो जाएगा. सिटिंग इन द लाइन. फाइनल conclusion I can say is I'm eligible in all the subjects. I got the sign in all subjects and I paid the exam fees also. अभी सिर्फ एग्ज़ाम लिखने का बचा है, बाकी कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने का है कल सुबह एंड सबमिट करने के बाद I'm gonna go to my home and start studying again because ये रूटीन तो पहले से ही डिस्टर्ब हो चुका है एंड सीरियसली रेस्ट इन पीस
Peace out. I'm gonna sleep now. I'm gonna freshen up and sleep now, at least for 1 hour, and then I'll see if I have the energy to study or not. So yeah, that's it. Hi guys, I have been fallen. I have fallen sick. I'm having severe cold and a little bit of fever also. Headache was there yesterday. I took tablets and took a lot of steam. मेरी आवाज़ जा चुकी है. Whenever there is a change of cities or I'm traveling now, this only happens with me. Literally waiting when will this chaos stop. Again, I'm running to the admission section to get the signature. Seriously, मतलब कब खत्म होने वाला है और कब मैं घर जाऊँगी.